Conservation of natural resources. As we know that the life of all living beings like human beings, they depend upon earth's natural resources. अब ये सिचुएशन नाउअडेज ऐसे सिचुएशन आ गई है कि बिकॉज ऑफ टेरिबल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज दे आर बिकमिंग लो. soon there will be time when these resources जो है that will get extinct. So we should take a step for the conservation of these resources. Conservation means the wise and careful use of these resources without wasting them. As the population of world has increased and their needs is also increasing, therefore if we do not practice conservation, we will endanger our own survival. अगर हम इनको कंजर्व करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो इट विल ओनली हार्म अस. So some exhaustible natural resources are, first is your fuels. Fuels, those substances which produce heat and light energy on burning. उन चीज़ों को जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है जब भी हम उसको बर्न करते हैं, दे आर नोन एज फ्यूल्स. एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स इज़ वुड, कैरोसिन, LPG, पेट्रोल. Now when a fuel burns, as you know that fuel contains energy that is locked within the chemical bonds for their constituent molecule. When they are burnt, a chemical reaction takes place. केमिकल रिएक्शन अगर करता है तो केमिकल बॉन्ड जो हैं वो ब्रोक होते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं. सो विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड. क्लियर? नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स. The fuels which are formed naturally from the buried remains of plants and animals. Millions of years, कोई भी plant या animal that is buried under the earth, it forms the fossil fuels. An example of them is coal, petroleum and natural gas. All living plants and animals derive their energy. They release their energy. They get their energy from the ultimate source, that is sun. So energy stored in fossil fuels is indirectly derived from the sun, and the energy that is released by burning of fossil fuels, they can be used to cook food, for running engines, to generate electricity. These are the advantages of the fossil fuels. Now the first fossil fuel that we are going to start is coal. What is the property? Coal is a black, hard, solid fossil fuel which is formed over a period of millions of years by the gradual decay and compression of buried remains of plants. Millions of years ago अर्थ जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, ठीक है, इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. नाउ ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस लाइक अर्थवॉर्म आ गया, earthquakes, volcanoes, floods. So these forests, when these natural processes occur, these forests that get buried into the soil. और जैसे जैसे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होता गया उन ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है, वो कंप्रेस्ड होते गए. अब द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे वो डीप जाते गए ट्रीज़, उनका टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया. अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो डेड प्लांट्स थे ये स्लोली किस में कन्वर्ट होते गए? दे कन्वर्टेड इनटू कोल. एज द कोल दे मेनली कंटेन्स कार्बन. मेन सोर्स ऑफ कोल इज द कार्बन. So this slow process of conversion of dead vegetation, that is dead plants, into coal is known as carbonization. So what is carbonization? That is the conversion of coal, that is slow conversion of coal by dead and decaying plants. Now depending upon carbon content, coal is divided into three main types. Lignite, that has about 38% carbon. Then is your bituminous, that has about 65% carbon. Your anthracite, that has 96% carbon.
when we heat it in air, when heated in air, कार्बन को जब हम in the presence of air हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होती है? It mainly produces carbon dioxide. Coal is one of the fuel that used to cook food. Earlier it was also used to run the railway engines for producing to generate electricity. Coal in India, there are many coal mines are found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. It is possessed in industries to get some useful products. कोल से हमें और क्या मिलता है? That is coke, coal gas, coal tar and ammonical liquid. These are the some useful products that we obtain from the coal. Next is destructive distillation of coal. Now the process of heating coal at 1000 degrees Celsius in the absence of air. याद रखना है आपने, हमने यहाँ पे कोल को हीट किया है कितने डिग्री में? 1000 डिग्री में, और किसकी एब्सेंस में? एयर की एब्सेंस में, ठीक है। टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये कैसे अकर करता है? कोक, व्हाट इज़ कोक? कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स, दैट इज़ one is coke. It is a tough, porous, black solid residue which is left behind when destructive distillation is carried out. कोक जो है दैट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? दैट इज़ द कोक, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. इट ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड सच एज आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड टू गेट द मेटल्स. It is used to manufacture fuels like water gas by passing steam. कोक को जब हम स्टीम पास करते हैं उसमें तो क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म HCO plus H2 दैट इज़ वाटर गैस. कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर N2 plus O2 इट फॉर्म्स द प्रोड्यूसर गैस CO plus N2. ये रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए. दिस रिएक्शंस ऑल्सो यू हैव टू डू. Next is coal gas. It is a gaseous fuel having hydrogen, methane, carbon monoxide and other gases. Coal gas जो है it is also a gaseous fuel which have hydrogen, methane, carbon monoxide and other gases. Next useful product is coal tar, which is thick black liquid which contains several carbon compounds. And these compounds, they are used for making pesticides, perfume, synthetic fibers. And the last product, that is ammonical liquor. It is a mixture of ammonium compounds which is dissolved in water, and it is also used for making nitrogenous fertilizers. So this was about the coal. In the next video we'll do about the petroleum.